was earlier before I contested election. That's wrong. Just because a certain section of the people have moved forward, that does not mean हम खुद ही बोलते कि I come from that 0.1% of Dalit women. The South Indian auntie who used to make. नहीं LSR में एक South Indian auntie आई. Young people come in politics, they want to look like old people. Understand what I'm saying? Usually comes in your mind is कि हाँ एक वृद्ध आदमी होंगे, भाइयों बहनों चलकर जो है नारा लेते हुए आएंगे. I've actually given UPSC once. We cannot always build the future for our youth, but we can definitely build our youth for the future, said the champion of democracy, Franklin D. Roosevelt. Welcome on board, people. This is Electoral Literacy Club, Hindu College, University of Delhi. And this brings me immense joy to bring you the most awaited person, and as ma'am call herself, the Gen Z member of parliament herself, Shrimati Shambhavi Chaudhary ji. Ma'am, it was really honorable moment for us to have interaction with you earlier as well. It's really great to have you once again, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. My name is Avinash Gautam. Along with me are some other individuals from ELC. We are going to start with Harshit sir. Please introduce yourself. Myself, Harshit. I am a Vice President of Electoral Literacy Club. I am in third year political science student. Hello, I am Priya, second year student from History Department, and I am Junior Executive of Electoral Literacy Club. Arya Chaudhary here, member of Electoral Literacy Club and also a Junior Executive. Alright. So as Bollywood does it, let's start from the very beginning. शुरुआत से शुरू करते हैं. So ma'am, as we delve into more deeply about you and how you proceeded with your journey, how active were you during your days in the Delhi University? And my friends really wanted to ask this question. अगर हमने नहीं पूछा उनको जरूर मारेंगे वो जाकर कि were you active in your college days, student unions? So during my college days, I was in Lady Shri Ram, and उनका जैसे DU का जो elections होता है उससे थोड़ा हटके LSR होता है. And my parents were very strict regarding my education, so I was not allowed in a way कि they didn't like the idea of me politically being very active in college and overlooking my studies. So at that point they were like, okay, you want to get into politics and everything, that is fine, but right now right now the time for you is to focus on your studies. But I was very socially active, and I was because I come from a political family, I have a political background, so I used to have those interactions with different party holders, stakeholders. But if you ask me about college politics, then no, I was not active in college politics. But क्योंकि you come from a political family, हमारा environment ही वैसा होता है, so I was constantly in touch with say members of the legislative assembly or members of the parliament. So I used to meet them, interact with them. I knew about what is happening in my state. I knew what politically I was very aware, but I was not part of any unions in college. Very well, thank you so much. Ma'am, as a young politician who has also been part of the DU circuit, so how similar or dissimilar do you find the state and regional or state level politics? Like you've seen the DU politics and you compare the Bihar politics or the national politics. See, in DU politics, if you talk about what's happening in colleges right now and how these universities are conducting their elections and the narratives that they are setting up is very, very separate from what actually happens when you're contesting in electoral politics. The agendas are very different, because when you are in university elections and when you are contesting in colleges, so the priority automatically becomes students and students' rights, right? But when you're doing the state or nationally, then definitely you are trying to appease the majority. You're only thinking about can we get more votes? What should we do to, the benchmark is winning elections. So that is this is the main difference. Agenda wise we are very different. Second is that different states have a different way of identifying with whom they want to vote. Like in Bihar, caste politics is very prominent. So in Bihar, other issues I think gets a little sidelined, and caste becomes very predominant when you're even deciding about who to give the ticket, what to think. आप वो वैसे demography set करने लगते हो कि यहाँ पे इस caste के इतने voters हैं, उस caste के, and I am
I'm a Gen Z politician, and no matter how much I try to change it also, I can't overlook the fact that caste identity is very important to people. And they cannot alienate themselves from that identity. So this is there. And in universities, third point is that there is I think I would like to call it like intellectual politics hota hai. When people are talking about ideologies, debating about it, there is fruitful discussions, debates, because we are progressing as students. We're also progressing in our thought processes. So when we sit down and talk to other students, or when you're a part of some society in college, you would like to engage in healthy discussions. But when it comes to electoral politics, everything is about appeasing your voters. So this is the main difference. Putting all the factors together, so like we have many young academically oriented or non-academically oriented students. They find themselves a little disillusioned with politics, like it is not a safe space and everything regarding that. So what would you like to say to them? See, politics is a dynamic thing. It's ever evolving. It's like politics is a profession that involves humans, and it's like psychology. No two people are the same. Everybody has a different thought process. Everybody thinks differently. You have to tackle with everybody differently. So what used to happen 10 years ago is not happening now. So definitely, politics has now become, as a woman MP also, I think that politics has now become safer and safer for women. But also politics is a very difficult job, because it's something that consumes you mentally, emotionally, and physically. You start forgetting who your original self is. Like I am I've just won election 6 months ago, and I campaigned for two months. So you can calculate 8 to 10 months I've been in active politics, and I've really forgot who I was earlier before I contested elections. And I'm saying this because you all are students and you all are somewhere trying to understand what actually politicians are doing. This is not a 9 to 5 job. Somebody can call me at 11 and they can, school me ki aap ye nahi kar rahi hain, aap wo nahi kar rahi. Somebody can, and the thing is that people remember their leaders in the difficult times. So it's not all rosy कि ओ चाह भी है, बहुत खुश हैं तो चलो नेताजी को फोन करें. ऐसा नहीं होता. लोग जब परेशान होते तभी अरे नेताजी को फोन करो करते हैं. So you're also gathering a lot of their difficult times. It's getting to your mind. तो मेरे साथ I think it's a very it consumes you mentally, emotionally, physically. You have to think about your constituency. You have to be in the place that you've been elected to. Like parliament is in Delhi, so for me Samastipur, Delhi, then my home, so Patna, then my social circle. They also then start expecting कि अब तो यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ. So physically also it's very draining. But I don't think it's unsafe to be in politics, but it's highly demanding. And in politics, perception is everything. My father used to say that politics is about 3 P's. One is perception, one is patience, and one is presence. So what people are thinking of you, and when you are in politics, you're dealing with so many different kind of people that you have to be very patient. And presence is that if you're not physically present in a situation, then it makes no value. So then physically present also. Also, ma'am, it is talking about your college life. The most common question that comes is regarding your course. As you did sociology, your UZ, your masters all in sociology. So, how those academic values help in your current decision making or other aspects of the field? So, because I studied sociology, I studied the society. My subjects were economic sociology, political sociology. I had religion in society. I had caste society, castes in India, sociology in India. Then, so in the course of like 6 semesters, we did quite a lot of studying of the society. And I feel that there were some topics in sociology in India which is really helpful in understanding how I want to take these different sections of the society, say caste or class or gender. What my theories were saying, is it really true? Am I going to implement? So normally ये जो theories होता है ना, वो everyday interaction में implement नहीं होता है. It just gives you a better understanding of what you are doing, how you are dealing with people, what kind of society you are talking about. And I also feel that it gave me a good understanding of caste, class and gender. Because now that we are talking about caste politics, then obviously it plays a very important part in why people
associate with their caste so much? Why is the caste identity so strong? Why can't people alienate themselves from their caste identity and think in different brackets? So definitely all of these things has played a crucial part in trying to frame what kind of thought I am going to have, what kind of ideology I am going to have. But when it comes to practically implementing those, then I think still theories, मतलब times have changed since the time those theories were written. But ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि वो हर दिन some new article is coming, somebody is doing a new study, something is happening. But there are some things which are very similar, like when I was doing my masters, we read about the 2 shifts that women are working in gender. And it was by Hochschild, and how she said that, okay, these people, the women, they work in 2 shifts. One is they go to the work, then they come back home, and this was during the American times when women had just started working. So I think it's still very relevant right now. So कुछ पढ़ाइयाँ अभी भी relevant है, और कुछ theories को आप एक better understanding बना करके how you look at the difference that you're trying to create, उसमें वो काम आता है. So wrapping up your college life with that one advice that you want to give to the Delhi University students who want to come in politics or public spheres in their future life. I think you definitely should, because I really encourage youth in politics, and our party's national president Shri Chirag Paswan ji also keeps focusing on involving youth and the women in politics, because we are the future. And I honestly believe that जब तक आप मॉडर्न तरीके से सोचना नहीं शुरू करोगे और कंटेम्प्रेरी आइडिया से अपने आप को रिलेट नहीं करोगे, आपका पॉलिटिक्स भी पुराना हो जाएगा. We cannot be guided by what people were doing 20 years ago. Times have changed, people have changed. Now new people are coming with new needs. And जब नए लोग आते हैं नई ज़रूरतों के साथ, तो वो नए लोगों को पॉलिटिक्स में या फिर पब्लिक स्फेयर में आ करके उनकी बातों को सुनना, अपनी बातों को बोलना, having the confidence and the courage within yourself to speak your mind, that is very important. So it's not about choosing to do politics or speaking in public sphere. I would just say that whatever you aim to do is going to decide the course of our future as a country collectively. It's not about you being in politics, or it's not about you trying to be a politician. It's about whatever you do will decide where our country will go in the near future. So act responsibly, think about what you're doing, and have the courage to believe in your dreams. I think that is the most important. Very much true, ma'am. A very small query, ma'am. You mentioned about caste census. अभी हम संसद के गलियारों में सबसे ज़्यादा किसी की अगर मांग चल रही है जाति जनगणना, तो मैम हम देखते हैं कि कास्ट सेंसस इतना प्रेसिंग इशू हो चुका है. बिहार में एक लौता एक तरीके से बना कि जहाँ पे कास्ट सेंसस का नतीजा सामने आ सका. अभी हम लोग 2011 में संसद के करवाए थे सेंसस, बट कभी उसका डेटा बाहर आ ना सका. तो व्हाट आर द लिमिटेशंस दैट वी फेस इन कंडक्टिंग द सोशियो इकोनॉमिकल एंड द कास्ट सेंसस, considering there are very many demands that are coming in, and the issue of the digital nature of caste census, any issue in the matter of privacy, accessibility is also a concern according to you? So about caste census, definitely caste census होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब पॉलिसी डिजाइन करते हैं, जब योजना बनाते हैं, तो we should have proper information about the kind of people that we are catering to. What are the implications of the policies that we are designing? किस तरह से हम लोग अपना पॉलिसी आगे लेके चलना, और इसके लिए आपको अपनी प्रजा को जानना बहुत जरूरी है. जनता को क्या चाहिए, कितनी जनता, किसकी आबादी कितनी है, ये जानना बहुत जरूरी है. क्योंकि आप पॉलिसीज तो डिजाइन करो, पॉलिसीज एक टाइम पे डिजाइन हुई, अब हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें हम लोग को कोई चेंजेस करने हैं कि नहीं, इस पॉलिसी को आगे लेके जाना है कि नहीं. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड उसके लिए जैसे आप जेंडर का करते हो कि कितनी महिलाएं, जैसे जो आपका जो नॉर्मल सेंसस होता है, पॉपुलेशन सेंसस होता है, उसमें आपको पता होता है कि हाँ इतने युवा हैं, इतनी महिलाएं हैं, लिटरेसी रेट ये है. तो वैसे ही कास्ट का एक एंगल है कि इतने कास्ट हैं, इतने ये. बट वी डोंट बिलीव इन मतलब गिविंग दैट डेटा टू द पब्लिक, बिकॉज देन डिविजन्स क्रिएट हो जाएंगे. सो आई थिंक कास्ट सेंसस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि क्या है, क्या कास्ट है, कितना डेमोग्राफी बढ़ा, कितना डेमोग्राफी कम हुआ, पॉपुलेशन में बूस्ट है नहीं है, किसी कास्ट को कितना केटर किया जा रहा है, जो डिजाइन की गई है पॉलिसी वो उन तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दैट. But also, if we let out that data in public, then it's going to create a lot of division, and the politics is also going to change. Welfare politics के अभी हम लोग बात यही कर रहे थे कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स इतना डोमिनेंट है. अगर कास्ट डेटा और बाहर आ जाता है तो पॉलिटिक्स ही पूरा बदल जाएगा. और वेलफेयर अभी हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू किए हैं टुवर्ड्स विकास एंड डेवलपमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स.
फिर हम लोग वापस उसी में चले जाएंगे कि जिसका जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगा उसको ही आप Yes, चुनाव लड़ाओ, उसी को आप जिताओ, तो वैसे होने लगेगा. सो दिस इज आवर टेक ऑन द कास्ट. उस कड़ी में अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का एक तरीके से विवादित जजमेंट भी आया, एक तरीके से गाइडलाइन आया जहाँ पे सब क्लासिफिकेशन विद इन Creamy द layer. शेड्यूल्ड कास्ट की बात की. आप उससे इत्तेफाक रखती हैं? See, we don't agree with what the judgment that came, creamy layer wala, because reservation was never based on economics. Reservation was not to economically uplift the people. Reservation was to socially uplift the segment that was facing untouchability. अब ये कर देना कि अब बिकॉज कि ये आप कर देना कि नहीं ये क्रीमी लेयर है और इनका पॉपुलेशन ज्यादा है तो सिर्फ यही रिजर्वेशन ले रहे हैं. आई थिंक दैट्स अ वेरी बायस एंड अ वेरी लिमिटेड थिंकिंग ऑन द रिजर्वेशन. क्योंकि रिजर्वेशन कभी भी आपको पैसा दिलाने के लिए नहीं था. रिजर्वेशन आपको मान सम्मान और इज्जत दिलाने के लिए था. अब आप उसको उस पर आप कटाक्ष नहीं कर सकते हो ये कह के कि इतने लोगों को मिला और इतने लोगों को नहीं मिला, तो आप उसको कैटेगराइज कर दो. एंड ऑल्सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू फर्दर, you know, right now the Dalits are consolidated. If you do this, then the Dalits will also start breaking apart. So I don't think कि this is right in any way. And reservation जो अगर हम लोग आरक्षण की बात करें और reservation की बात करें तो उसको ये सोच करके कर देना कि अरे it was for economic upliftment of the people. Income के basis पे आप उसको कैसे कर सकते हो? Because वो income के basis पे उस policy को ही नहीं बनाया गया था. Reservation meant to be a poverty alleviation Correct. program. It was not to इकोनॉमिकली अच्छा अब आप पैसा कमा लियो तो आपको हटाए. वो तो सोशल रिप्रेजेंटेशन होता है. जो लोग अनटचेबिलिटी आज भी छुआछूत है, हम लोग अभी भी देखते हैं कि अनटचेबिलिटी के केसेस हैं, सिर्फ बिहार में या यूपी में नहीं, देश भर में, साउथ इंडिया में भी हो रहे हैं. तो आप अब उसको क्या बोलोगे कि हम लोग सीरियसली अब उस छुआछूत को छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ गए? तो दैट इज रॉन्ग. जस्ट बिकॉज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल हैव मूव फॉरवर्ड, दैट डज नॉट मीन. हम खुद ही बोलते हैं कि आई कम फ्रॉम दैट 0.1% ऑफ दलित वुमेन. मतलब कितनी दलित महिलाएं हैं जो मेरे जैसी हैं? नहीं है. बट नाउ आई एम अ वॉइस फॉर देम. दे ऑल रेजोनेट विथ मी एंड इट डज नॉट मैटर कि हम क्योंकि आ गए तो आगे कोई नहीं आएगा या फिर नाउ आई विल वर्क एज अ कैटलिस्ट टू ब्रिंग दोज दलित वुमेन अप. तो ये हो जाता है. अब ये कर देना कि आप ये सेक्शन को मिल रहा है तो ये हट जाएं, ये सेक्शन को, दिस वुड फर्दर जस्ट गोइंग टू डिवाइड द दलित्स एंड डिफीट द एंटायर पर्पस ऑफ रिजर्वेशन. I'm adding further to what Abhinav said. When we see the idea of reservation in contemporary times, I think the last 2 to 3 years, we have seen the whole dynamics of reservation is evolving. For example, we have EWS reservation, we have Nari Shakti Adhiniyam bill that provide reservation to women, and the sub-classification judgment that you have talked about. So, ma'am, what are your stand about the evolving nature of the reservation system that we are currently? See, reservation system, अगर हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भी बात करें तो आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. बिहार में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, लोकल गवर्नमेंट जो है, उसमें 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए. तो महिला वहाँ पे 50%, मतलब जब आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे तो देयर आर 50% women who are ग्रास रूट पे लीडर्स. Okay, but when you see the Bihar Vidhan Sabha, then the percentage dips to about 4%. When you look at the parliament, then it dips to 11%. So problem ये हो जाता है कि अगर आप उन लोग को आरक्षण दोगे नहीं तो वो आएंगे ही नहीं, उनको लाया ही नहीं जाएगा. डोमिनेंस हो जाता है. So it's not about कि am I in favor of it or am I not in favor of it. The question is if we don't do this, then other people will not come. अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पॉलिसी आ गया, पर कितनी ऐसी पार्टीज है जो सही में 40% महिलाओं को टिकट दी? मतलब ये थॉट तो आ गया था ना कि 33% आरक्षण होगा महिलाओं के लिए सदन में, पर उसके बावजूद वो थॉट के बाद भी कितनी महिलाओं को टिकट मिला? वो तो सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी थी जो उनके पास 5 सीट थी, हम लोग के पास उसमें से 2 को चिराग पासवान जी ने 2 महिलाओं को टिकट दिया. बट बाकी आप अक्रॉस द आइल ऑपोजिशन गवर्नमेंट सबको आप मिला के देख लो, ऐसी कितनी पार्टीज हैं जो ये की. सो द थॉट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग, द आइडिया इज ऑल्सो नॉट वर्किंग. आप जब तक रिजर्वेशन, अभी देखो अब रिजर्वेशन होगा तो 33% महिलाएं आ जाएंगी. सो इफ यू हैव टू मतलब if you have to take forward a certain section of the people, you have to give them that protection. It's called positive discrimination. So it's an affirmative action to bring those people up in the society who've been neglected for a very long time. Okay, ma'am, when we talk about reservation, generally जनरल पीपल के माइंडसेट में होता है कि वो बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट होती है. दे डू नॉट सी इट एज अ सब्सटेंशियल इक्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री. सो व्हाट आई थिंक इट्स देयर प्रॉब्लम.
honestly. It's their problem. They're very ignorant towards other sections, and I just feel कि ये जो लोग बोलते हैं कि reservation नहीं होना चाहिए या फिर ऐसा होता है मेरे हक को मार दिया गया है, ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया, they don't understand the kind of atrocity and the kind of they're very ignorant in their idea, in their thought process. जस्ट टू फील कि मेरे हक को मारा जा रहा है इसीलिए हम आपको नहीं देंगे. तुम आप देखो ना यार, यू द काइंड ऑफ प्रिविलेज दैट यू गाइज हैव गॉट. इट्स नॉट इवन अबाउट, इट्स नॉट, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, बट आप ये सोचो, आप उतने को देखो. हम लोग गांव में भी देखते हैं तो आप बता सकते हो कि ये दलित का गांव है और ये किसी अपर कास्ट का गांव है. यू कैन टेल इट जस्ट बाय लुकिंग एट इट. So it's not कि the people I think who say कि reservation नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, it's really their problem and I don't even engage in a conversation with them because I think कि बहुत ही limited उन लोगों का सोच है. I'm shifting further from politics of reservation to election later. We are electoral club, so we go focus on that. So ma'am, for example, you have said that बिहार में कास्ट ज़्यादा dominant है. इसी तरीका से बहुत सारे स्टेट में इन टाइम रिलीजन ज़्यादा dominant है, कहीं और ज़्यादा एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी ज़्यादा dominant है. So being a young, like Gen Z member of the parliament, or youngest member of the parliament, how you address those issues? Like how to challenge the electoral integrity or accountability of the MPs toward the people? How? I think now we are moving towards, although caste politics is very dominant in Bihar, but if I talk about my politics, and I'm trying to, I do identify as a Dalit woman in the parliament, and I do want to work for. My priority will always be working and uplifting the section of the people that's still downtrodden, but I don't limit myself to that ideology. I want to do a development driven politics where I do work for them, but I also think of how to lead the other sections of the society. Because I am a member of parliament for everybody. ऐसा तो नहीं है ना कि हम सिर्फ एक सेक्शन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और दूसरे के नहीं है. एंड नाउ आई थिंक व्हेन आई हैव माय प्रोग्राम्स और व्हेन आई हैव माय any public interaction meeting or anything, I try to engage in, I try to understand everybody's problems, how it's happening, what is happening, if there is a solution that I can give to it. I try to focus on the implementation of policies, because जब आप सीधे development driven politics करने लगोगे जिसमें विकास becomes a priority, then ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे छटने लगती. हाँ, फिर वो अब वो चीज मतलब कास्ट आइडेंटिटी को हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं. हम तो हमेशा कह रहे हैं कि यार आई एम अ दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आई हैव टू वर्क फॉर दलित आइडेंटिटी एंड आई हैव टू रेज देयर कंसर्न्स व्हेन इट कम्स टू दैट, बिकॉज नोबडी एल्स विल. I know that, so I have to do it. But just focusing on that and not being ignorant towards other aspects is not something that I do. When I go to the constituency, when I am addressing people, when I am meeting people, for me, I feel that अगर कोई गरीब है, अगर कोई वंचित है, शोषित वर्ग से हैं, अगर उनको मेरी सहायता की ज़रूरत है, if they seek some kind of help from me, I have to give that help to them. I can't deny them of anything. जो मेरे कैपेसिटी में करने का है, और सिर्फ ये करके कर देना कि नहीं आई डोंट वांट टू बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू योर कास्ट, आई थिंक दैट्स नॉट व्हाट आई डू. Also ma'am, going through your policies and your ambitions, it is very evident that your work and your ambitions for young girl and women, that you have also placed to donate your 5-year salary for the young girls' education. And since I am also from Bihar, I have seen the lack of education among girls. So if you could explain the ideologies and the main programs of this initiative, and also one message for those young girls who actually want to join politics. So when I went to the idea of donating 5-year salary, it came from the fact that when I went to Samastipur for the first time, I told them that I am here to serve you as your daughter. And एक चीज़ हम हमेशा कहते थे कि आई एम द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम समस्तीपुर, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल देम कि बेटा आपको धोखा दे सकता है पर बेटी आपको धोखा नहीं दे सकती. एंड हम लोग अब एक ऐसे पॉलिटिकल स्फेयर में आ गए जहाँ पे जब आप कुछ बन जाते हो, MLA, MP, कोई भी पोस्ट पोजीशन पे आप आ जाते हो, देन सडनली ना लोग आपको बहुत ऊपर देखने लगते हैं. कैंपेन के टाइम दे रिलेट टू यू, और फिर उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद सडनली यू विल बिकम अ बिग थिंग फॉर देम. तो मेरे को ये जो एक रिलेशनशिप और कनेक्शन हम अपने कैंपेन डेज में डेवलप किए थे, आई डिडंट वांट टू लूज इट. So I always kept saying that I am your daughter, you have to look at me like your daughter, because
देखिए राजनीति के लिए आप रिश्ते बनाते हो वो चीज अलग होता है, और आप अपने पूरे जीवन भर के लिए एक रिश्ता बनाना चाहते हो वो अलग होता है. एंड आई डोंट वांट टू फॉरगेट द पीपल, बिकॉज व्हेन आई वेंट टू समस्तीपुर आई जस्ट वेंट एज शांतवी, and when I came back from Samastipur I came back as a member of parliament. So this gift to me has been given by my people from Samastipur. And my grandfather used to really focus on education, and because वो दलित परिवार से आते थे and उस टाइम पे दलितों के लिए पढ़ाई करना और भी मुश्किल होता था, but because he studied and he finished his education, he uplifted the entire generations to come. So education anyway in my family is a big thing, like my father also focused on education. So मेरे को ये लगता था कि because my parents never differentiated between a son and a daughter, and my grandfather, my father, everybody had a focus on education. And because now today I am educated, I am well aware of my rights, I am well aware of the things that I want, I am financially independent, so I can take a stand for myself, I can say no to things that are not right. So इसीलिए मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को भी समस्तीपुर की जो बेटियां हैं, बिकॉज आई हैव दिस कनेक्शन विद देम, जो समस्तीपुर की बेटियां हैं उनको हमको आगे करना है. एंड हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब भी किसी फैमिली में फाइनेंशियल क्रंच होता है, या फिर कभी कोई बीमार पड़ जाता है, या फिर कोई से फाइनेंशियल बर्डन आता है, तो सबसे पहले अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है तो वो बेटी का एजुकेशन होता है. अगर बेटा बेटी भी है तो होता है बेटी को छोड़ दो, बेटा को तो कैसे भी लोग पढ़ा देते हैं, बेटी का छोड़ देते हैं. इसीलिए I want to promote education in girls, and I want to give this money that I've got in the form of salary back to समस्तीपुर, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से I don't think कि मेरे को कोई ऐसा है कि मेरे को कमी हो जाएगा if I don't use my salary या कुछ. भगवान का मतलब दिया हुआ काफ़ी कुछ है मेरे पास. So I just want to give this back to समस्तीपुर and promote education in girls. सिर्फ education ही नहीं, but about their health also. Technical courses हो, आपको किसी में ट्रेन करना हो, आपको स्किल डेवलपमेंट करना हो, उसकी फीस होती है, बहुत मुश्किल होता है. इफ़ यू वांट टू ट्रेन समबडी इन अदर स्किल्स ऑल्सो, कंप्यूटर्स हो या फिर सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट हो, तो ये सारी चीज़ों का ना जैसे जैसे आपके पढ़ाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे ना अमाउंट भी बढ़ता जाता है. तो इसीलिए आई थॉट कि नो, आई वांट टू डोनेट माय सैलरी एंड आई वांट टू अपलिफ्ट द गर्ल्स ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूएंसी. Do you think जो political awareness है वो electoral awareness पे काम कर रही है? For example, many DU students they don't choose to go to their constituency during national or state elections. पर मतलब ये इतनी voter apathy, मतलब how to tackle that or how do you? I think everybody needs to think it कि आप अपने ही future में participate कर रहे हो. And it's not about voting for the party that I am coming from or the opposition. It's important for you to vote. क्योंकि आप ठीक है सोशल मीडिया पे आप पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो, आप सोशल मीडिया वॉर्स भी आजकल देखने को मिले हैं. सोशल मीडिया इज रियली engaged a lot of young people in politics. But if you are not voting, then it's not making sense. Then the whole purpose is getting defeated. It's important for you to vote because this is your future as well. एंड जितना पॉलिटिकल अवेयरनेस अभी भी युवाओं को गांव वगैरह में है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कम हो गया. मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आई थिंक पीपल स्टार्ट टेकिंग एवरीबडी फॉर ग्रांटेड कि ठीक है ना चले जाएंगे, एक दिन का छुट्टी है आज तो छुट्टी इंजॉय करते हैं, तो ये थॉट प्रोसेस आने लगता है. बट क्लियरली ये इट्स नॉट अबाउट चूजिंग विच पर्सन यू लाइक, इट्स अबाउट the government that you choose is going to have a direct impact on the policies that will come. जिस तरह की policy design होंगी आपके लिए, जिस thought process से वो लोग आगे बढ़े हैं उसी तरह की policies वो लाएंगे ना, उसी तरह की योजनाएं लाएंगे, उसी तरीके से वो देश के लिए काम करेंगे. So it's not about you, me or your family or a few members of your family. It's about your own future and what you see. And it's this right you get once in 5 years. So you have to think about it and you have to get out of your comfort zone and go and vote. हम लोग वोटिंग अवेयरनेस ड्राइव भी बहुत ज़्यादा करते हैं इन समस्तीपुर. जब हम लोग कैंपेन कर रहे थे तो आई जस्ट यूज्ड टू गो टू पीपल एंड से कि वोट डाल देना, मेरे लिए डालो ना डालो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जाके वोट ज़रूर करना. बिकॉज यू नो
एंड पीपल यूज्ड टू से कि अरे हमको अनाज मिल रहा है तो हम जो हमको अनाज दे रहे हैं हम उन्हीं को वोट करेंगे, जो हमको आयुष्मान भारत दिया हम उन्हीं को वोट करेंगे, आज हमको इस सरकार की वजह से ये हो रहा है तो हम उन्हीं को वोट करेंगे। तो ये चीज़ गांव में है, बट ये वाला अवेयरनेस अभी भी आई थिंक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं है। गाँव में तो लोग कलेक्टिवली वोट भी कराते हैं ना, मतलब आप फैमिली जा रहे हैं तो पूरा फैमिली उठ के जाता है वोट करने के लिए कि हाँ हम फर्स्ट टाइम वोटर हैं, करेक्ट, पूरा गांव साथ में वोट करने के लिए जाते हैं। पर यहाँ पे ये पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा होता है, छुट्टी करनी मैंने। हाँ बहुत सारे लोग, और कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जब इलेक्शन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि सपोज नाउ आई एम बिहार का वोटर एंड बिहार में इलेक्शन होगा और हम दिल्ली में होंगे तो मेरे को भी लगेगा कि अब एक चुनाव के लिए हम क्या जाएं, ऐसा लोगों को लगता है। पर इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इट दैट यू कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर ओन फ्यूचर, एंड जैसे आपका कपड़ा डिसाइड करते हो क्या पहनना है, जैसे आप सोचते हो हमको क्या खाना है, जैसे आप सोचते हो कि हमको मेरे घर में क्या लगाना है, वैसे ही ये देश के लिए है। मतलब आप क्या पहनोगे खाओगे विल मतलब दिस इलेक्शन विल डिसाइड व्हाट यू विल वेयर, व्हाट यू विल ईट, व्हाट यू विल डू इन द नियर फ्यूचर। सो प्लीज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू वोट, एंड पॉलिटिकली अवेयर हैं आप तब तो आपको और जा करके वोट करना चाहिए, बिकॉज यू नो दिस इज अ वॉर ऑन आइडियोलॉजी, सो इट्स इम्पॉर्टेंट। So ma'am, like you talked about the gender being an important aspect of any politics, और recently 2019 का election देखें, general election, और recent दिल्ली का election देखें, the women voter turnout increased, मतलब it some places got part than men's. So, and the recent various other political analysis used to say कि जैसे आजकल फ्री बीस चल रहा है कि यहाँ 2500 दे दो, 2600 दे दो women को. So how do you see such a political development of gender politics apart from caste politics or religious politics? जेंडर पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें तो आधी आबादी की जो राजनीति है वो बिहार में बहुत पहले शुरू हुई थी। जब नीतीश कुमार जी सरकार में आए थे, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, वो आधी आबादी के राइट्स के लिए 2005 से काम करना शुरू कर देते थे। उनकी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको यूनाइटेड नेशंस जैसे संस्थान जो है वो अडॉप्ट किए थे। उनका साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, हर घर नल का जल भी उन्हीं का दिया हुआ है, 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी उन्हीं की दी हुई योजना है। So if you want to ask me about the future of gender politics, it's important because पहले कोई महिलाओं के बारे में उस तरह से सोचता नहीं था कि हाँ इन लोग भी क्रूशियल हैं when it comes to voting या फिर deciding on which government is going to come. बट जब हम लोग आधी आबादी का बात करते हैं तो ये फैक्ट है 50% women है and you can't overlook that. So it's a good thing that we are moving towards gender based politics because जब आपको पॉलिटिक्स में ये चीज़ होता है कि जब आपको ये लगने लगता है कि हाँ इनका वोट भी इम्पोर्टेंट है, उनका मान सम्मान ऑटोमेटिकली बढ़ना है। इट्स द डार्क रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स। तो अब हम लोग उस तरफ उस दिशा में जा रहे हैं जहाँ पे आधी आबादी को वो मान और सम्मान मिल रहा है और इट्स अ वेरी वेलकमिंग चेंज। आई सी इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे एंड आई ऑल्सो फील दैट आने वाले समय में जैसे हमारे आज पुरुष नेता हैं वैसे हमारी महिलाएं नेता भी खड़ी होंगी और जब वो महिलाएं नेता आएंगी तब वो विमेन चैलेंजेस के बारे में वो बात करना शुरू करेंगे। राइट, तो हम ELC की एक पहल है नो योर नेता, so we would be having your rapid fire question round. Right. You would have nothing more than 1 to 2 seconds to answer each question in 1 to 2 words. Right, so members, we are going to begin with the rapid fire round. Alright ma'am, what comes to your mind when I say college life? That South Indian auntie who used to make Dancers. नहीं LSR में एक South Indian auntie, I used to eat her food every day और मेरे पास मेरे को कोई टेंशन नहीं होता था बिकॉज आई लव साउथ इंडियन फूड और हम रोज उनके पास जाते थे। उस टाइम पे तो शी यूज्ड टू गिव अस फॉर 15 rupees, 20 rupees, बहुत मजा आता। Best place in Delhi University campus for chai and political gupshup, North and South campus both. So North campus I didn't visit that frequently, but DSC का कैंटीन बहुत पॉपुलर है तो DSC के कैंटीन में I have had once in North campus and South campus में तो हम लोग का LSR का जो कैफे है, नॉट कैंटीन, LSR का कैफे is the it place. One subject you loved in college, A. B. One you barely passed. One subject I loved in college, sociology in India, because बहुत ज़्यादा वो उससे
ये करते हैं. And one I barely passed religion and sociology. It was मेरे को ना मतलब बड़ा terms ना बड़ा confusing था. मेरे को लग रहा था कि कहना क्या चाहते हैं भैया. तो वो मेरे लिए थोड़ा difficult था उस time पे. One habit from college you still carry as a member of parliament? Carrying my water bottle. Yeah, I still have it. I got into this journey of trying to be fit and exercise and be healthy in my college days. और उसी टाइम पे वही पानी का बोतल मेरे साथ हर समय चलता था. पानी का बॉटल एंड ब्लैक कॉफी वो अभी भी मेरे साथ चलता है. What's your favorite hobby that no one else knows? Cooking. I think I've always said that I love reading and politics के पहले in college I used to read non-fiction. उस टाइम पे लगता था कि थोड़ा नॉलेज पढ़ना चाहिए, we should be aware of what is happening. पर पॉलिटिक्स में आने के बाद I started reading fiction क्योंकि अब लगता है कि alternate reality create करना in that space. Correct, and it's also important to distract yourself. So I read a lot of books, and it's known to everybody that I like to read different kind of books. But cooking, I think a lot of people don't know. And उसमें मतलब I can cook good decent food. पर मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता. So now it's become a hobby. Alright, if politics wasn't an option, what career option would you choose? I would have been a journalist. Journalist. You Yeah. do look like a journalist. Yeah, I really enjoy talking. I really like meeting new people. I want to ask questions, debate, talk. And in fact, when I was in school, I wanted to be a journalist. As a matter of fact, ma'am, when we ask you to imagine a politician, what usually comes in your mind is कि हाँ एक वृद्ध आदमी होंगे, भाइयों बहनों चलते हुए नारा लेते हुए आएंगे. The day I met you in the Western Court, that was the time when my perception changed. Secondly, first I was in this mindset when I saw your oath speech. Then I knew कि हाँ she's a person very much having good vocabulary. So sweet, that's very nice. But हाँ मतलब थोड़ा तो है कि हम लोग सबको अपना even if young people come in politics, they want to look like old people. Yeah, understand what I'm saying? अरे नेता का image को even when it comes to my choices of how I want to look like in my constituency, it's very similar. Now I don't wear that the साड़ी and all क्योंकि थोड़ा ज़्यादा difficult हो जाएगा. But हम लोग का भी यही होता है कि अपनी भारतीय संस्कृति को प्रमोट करें तो हम लोग भी modestly dressed रहते हैं and everything. But whenever I get a chance to be casual, I would like to go back to my pajamas. Every DU student from Bihar gets asked this question. Bihar से हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो. How many times did you have to correct them and say no, I'm preparing for Sansad Bhavan? नहीं. So now the thing is कि I'm actually giving UPSC. Yes. So जब हम कॉलेज में आए थे, you don't look like a Bihari. मेरे को अभी भी याद है कि बहुत सीनियर प्रोफेसर थी. And you know she actually held me out of the classroom once. मतलब I got late for my class. So she said to stand outside only. Okay, so हम लोग वापस जी के चले गए. But anyway, coming back to the point, so she was a very strict, very senior. She still is. She's a very strict and very senior professor in our department and LSR में. And हम लोग का tutorial हो रहा था. And कैसे होता है tutorial में आपके 10 बच्चों का ग्रुप होता है. तो हम लोग वो 10 बच्चे बैठे थे and we were having an interview. It was one of the first tutorials. And she said कि आप tell me about yourself and everything. And I said, oh, I'm this, and I'm from Bihar. She said, oh, you're from Bihar? But you don't look like a Bihari. तो मुझे लगा कि अब क्या पान वान अपने मुंह में क्या करें हम? तो ये तो होता है, ये बहुत common है. Who has been your biggest mentor or inspiration in your political journey? My father, definitely. My father because इसलिए नहीं कि वो नेता हैं और हम उनको देखे हैं, उनको राजनीति करते हुए देख के मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है. एंड आई फील कि एवरी डे हाउ ही इज डीलिंग with people, how he's talking to them, how he's keeping the people around him as a priority और उनके लिए वो कैसे पूरे मन से काम करें, तो ये चीज़ तो है ही है. But I've seen him go through the dark days of politics क्योंकि politics में हर चीज़ हमेशा अच्छा नहीं होता, आपको नीचे भी politics गिराते हैं. तो जब वो नीचे गिराते हैं और फिर आप कैसे उससे निकलते हो, how you have to bounce back to the top, वो I have learned from my father. So definitely he is my political guru. Like, ma'am, one political rival you secretly admire? One political rival I secretly admire. Okay. Supriya Sule. I think she is very
she puts her points in a very elegant manner, and she's somebody who is very she is competitive, but she's also very understanding, and she will always you know, लोकसभा में आपका लड़ाई झगड़ा कुछ भी चले, but she's like a mother figure to all the girls in the parliament. Were you nervous before your first speech in Lok Sabha? Yes. Very much. Yes. The oath I was not nervous, but my first speech मेरे को याद है कि my hands were shaking because I was not used to speaking in the parliament ना, और वो इतने आपके हाँ मतलब और वो इतने senior leaders सब बैठे हुए थे. I was like बाप रे अब हम कैसे बोले. Actually, I watched the speech, the constitution when you were talking. No, my first speech was during the motion of thanks for President's address in 2024. That was my first speech in the parliament. And मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब कैसे टाइम कैलकुलेट होता है, कैसे होता है. फिर उसके बाद तो अब now I've got the knack of it. Now I'm not nervous. Last question, ma'am. One law or rule you would like to implement if you have given a chance? बाप रे, ऐसे तो बहुत ही सारे हैं. One. These I think the wage gap. Something about the wage gap. Men and women get differently paid for the same job, so something about that. Alright, ma'am. So this was the end of the rapid fire questionnaire round. And with this, ma'am, we come towards the conclusion of this very, very interesting, healthy and marvelous interaction with you, ma'am. And it was our honor to have you on board, ma'am. Thank you. I also had a lot of fun because I'm so used to getting interviewed by very senior traditional journalists. But this was a refreshing change, and I wish you guys all the best. And I love the work that you're doing, trying to create electoral awareness. It's very important, and I think you should keep up with the good work and inspire more and more young people to politically participate, not only just debates and social media, but also when they're voting. Thank you so much for having us. And Thank you. my dear viewers of ELC and the DU, would like to leave you the viewers with this inspiration after interacting with ma'am. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. Thank you so much, and it was wonderful having you. Keep inspiring, keep motivating. Thank you so much. This was ELC, Electoral Literacy Club. Thank you. Very nice. Thank you so much. चाय तो ठंडा हो गया, गर्म करवा दे.